जय श्री कृष्णा, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। पिछला एपिसोड आपको याद ही होगा, हमने बात की थी पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप को लेकर। आज भी उसी श्रृंखला पे हम बात करेंगे आज, लेकिन हम बात करेंगे बच्चों को लेकर। बच्चे अपने अंदर क्या बदलाव करें, क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा गलत बच्चों के साथ बैठता है, गलत संगत में है, ये सारी चीजें सीख रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं है और मेरा कहना नहीं मानता। सवालों के पिटारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इन सवालों को एक एक करके खत्म कैसे किया जाए, ये हम आपको बताएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज भी मौजूद हैं साध्वी भगवती जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे याद है आपका एक एक शब्द जो हमने पिछले एपिसोड में आपसे जिक्र किया था, कॉन्वर्सेशन जो हम लोगों का था कि पेरेंट्स को अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की उम्मीदें गलत नहीं है। देखिए, अपने बच्चों से अगर वो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा उस पीक पर पहुँचे, उस हाइट पर जाए, तो ये सही है बिल्कुल। लेकिन जब माता पिता बच्चों को समझाते हैं, जब बच्चा छोटा होता है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, आपको सोसाइटी में ऐसे आगे बढ़ना है, आपको ये करना है, आपको ऐसे बिहेव अपना दूसरों के साथ करना होगा, तो ये सिखाना, ये संस्कार देना गलत नहीं है। लेकिन अब बच्चा उसको किस तरीके से ले रहा है ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर माता पिता का कहीं ना कहीं मन से ये इच्छा होती है, उसका संकल्प होता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए। लेकिन कमियां कहाँ रह जाती हैं इस बीच? सब कुछ अच्छा होने के बावजूद माता पिता के संस्कार बहुत अच्छे हैं, थॉट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चा गेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? मुझे ये लगता नहीं है कि क्या हो रहा है कि there's a big discrepancy between our words and our actions. So many times I've heard parents say to their children, do as I say, not as I do. Now, where is that any kind of parenting, proper technique? The children obviously are going to learn even more than what you say. They're going to absorb what you do. Let's take one simple example. Honesty. Every parent wants their child to be honest. And one of the greatest complaints that parents have is, my children lie to me. वो सच बात नहीं बताते हैं। जब भी उनको लगता है कि शायद I will be angry, वो झूठ बोलते हैं। Now we have to ask ourselves, where did they learn that? आपने सही बात बताई कि the sanskars that the parents give, they're well-meaning. All of the parents mean well. They're doing the best they can. But let's look at just an example in our lives. So we want our children to be honest. We teach them honesty, honesty, honesty. Satya, satya, satya. We talk all about it. फिर क्या होता? कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कोई पार्टी, कोई डिनर, कुछ। We're running late. हम अभी गार्ड पे तैयार हो रहा है। फोन बजते हैं। फोन के ऊपर हमने देखा कि जिससे हमको मिलना है अभी, उन्हीं के फोन आ रहे हैं। करते क्या हम लोग? बच्चों को कहते हैं कि जरा फोन ले लो, उनको बोल देना कि हम लोग रास्ते पे हैं। खड़े खड़े, right? We all do this. I can't even tell you how many times I've seen this or similar things happen. Child gets on the phone and says, yes, we are on the way. That's true. Or say somebody keeps calling you. कोई आपसे कुछ चाहते हैं. Whatever it may be. You haven't done it yet or you don't want to do it. बार बार उनका फोन आते हैं. Guard पे, you see on the phone, it's that person's number coming. You say to your child, बेटा जरा फोन ले लो, बोल देना कि मैं अभी स्नान कर रही हूँ या मार्केट गई हूँ, जो भी है, उनको कुछ ना कुछ बोलो। ये आम बहाने होते हैं क्योंकि। Exactly. Then we turn around and we say कि पता नहीं क्यों मेरे बच्चे झूठ बोलने लगे। वो ये झूठ बोलने कहाँ से सीखा?
शुरुआत तो आप ही ने की. हमसे सीखा. बिल्कुल. Now, when we're talking about very simple, innocent things like I'm in the shower, I've gone to the market, we are on the way, we don't consider that jhoot. If you say to somebody कि आपने झूठ बोला, उनको लगे अरे कहाँ झूठ है? बिल्कुल. मतलब we don't consider that that's really a lie. But it is. What we have taught our children is, when it is convenient to you, tell a lie. If the truth is not convenient, if the truth is not helpful to you, if the truth is going to create some sort of problem for you, tell a lie. Tell them we're on the way so they're not angry. Tell them I'm in the shower so I don't have to talk to this person. Tell my boss I'm sick so that I don't have to go into work today and I can spend the day at home with my child or doing something. So we've taught our children to lie. And there's an even more really tragic and insidious way that this happens. If you pick up the newspaper, Hindustan Times, Lelo, Times of India, Lelo, any of the newspapers, you pick them up. Look in the matrimonial section. Whenever I'm on the train, there's this wonderful train that goes from Delhi to Hardwar, Shatabdi Express. So jab I'm on the train, they always give the newspapers. Usually I don't have time to see it, but sitting on the train, I open it. And I always go to the matrimonial sections. Now naturally, sabhi mere taraf dekhte hai ki kya sannyasi abhi matrimonial section padhi hai train ke upar. But the reason I'm reading it is for one thing and one thing only. 21 saal mein, in 21 years that I've been in India, aaj tak I have not seen one matrimonial jisme it did not say fair-skinned beauty. Fair-skinned beauty, fair-skinned beauty, fair-skinned beauty. Now, India is a country of exotic, gorgeous, beautiful, dark-skinned beauties. Norway, Sweden, Finland, Scandinavia, these are places where you have fair-skinned beauties. India is a place where we have dark-skinned beauties. It's the nature. Obviously, there's difference in tone. But in general, people here have darker skin tone than people living in Scandinavia. It's just the nature, the anthropological changes that have happened based on sun, based on so much. So what you have is young girls who are dark-skinned having to tell lies, watching their parents tell lies about who they are. Now they know they're not fair-skinned. They know that the minute they meet this boy's family or this girl's family, wo pata chala jayega कि this person is not fair-skinned. But what message have we given to our children? Who you are is unmarriageable. Who you are is not good enough. You need to lie in order for somebody to be interested in marrying you. Now, what kind of message does that give deep down inside? Usse bacha ko malum hai ki I'm not fair-skinned. They look in the mirror 100 times a day. They know I'm not fair-skinned. What does that do to them inside? It teaches them, number one, who I am is not enough. Number two, that in my life, आगे बढ़ने के लिए, in order to succeed, in order to find happiness, I have to lie. And now we wonder why our children have started lying. हमने सिखाया उनको. So we have to, it's not the parents' fault. Parents are doing the best they can. Every parent is doing the very best they can. Every parent has the very best intentions for their child. But without even realizing it, we're teaching our children these sanskaras. We're also teaching our children, for example, how to be superficial.
kahin jana hai, koi party, koi shadi, jo bhi hai. I'm getting ready. How many times do I look in the mirror and say, oh my God, I'm so ugly. Oh my God, I'm too fat. Oh my God, I'm too skinny. Oh my God, this. Oh my God, that. What are we teaching our child? That how we look in the mirror is the most important thing. That being too fat, being too skinny, being this, being that, there's something wrong. Then we wonder. Parents say, my God, my child has become so superficial. All they care about is clothes and makeup, ye wo. And we wonder, ki wo kahan se aaye? Wo to maine unconsciously sikaya. In the car on the way back from the shadi, from the party, husband and wife are talking, saying, my God, did you see her new sari? Yeah, she wore the same sari as last week. Did you see her new jewelry? Why don't you buy me jewelry? She's gotten fat, she's gotten skinny, kuch ho gaya, dekho how beautiful she looked, dekho how ugly she looked. Ye baat chal rahi. So what are we teaching our children? We're teaching our children that this is how we judge in society. We judge the sari, we judge the solitaire, we judge the jewelry, we judge the hairstyle, we judge the waistline. This is what our children are learning and imbibing. So as our children grow and they start lying or they become superficial, we have to understand this is what we have taught them. Based on that culture, based on how we were raised when we were young, 30 years ago, 40 years ago. But times have changed drastically and dramatically. And we cannot superimpose the values, the societal values of 40 years ago on today. Now, the foundation, of course, is the same. That's why we say Sanatan Dharma. It's eternal. It doesn't change with time or place. Whether you live in New York or Surat, it doesn't matter. The truth is the same. But there's a difference between eternal truth and societal norms. It's very important. We have taken societal norms and we have started calling them eternal truth. No.
One more question. Nowadays, social media, Yes. like Facebook and YouTube, Google and all, पेरेंट्स वांट्स कि भाई बच्चे इनसे दूर रहें, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे कुछ गलत देख सकते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ सकता है, और ऐसा होता है। मुझे लगता है कि बच्चे सोच रहे होंगे, बच्चे खुश हो रहे होंगे, अच्छी बात है, पेरेंट्स की गलतियां गिनाई जा रही हैं, बहुत टोकते हैं हमें, बहुत रोका टोकी करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों को भी थोड़ा सा सीखने की कुछ ज़रूरत है कि वो उम्मीद से ज़्यादा झूठ ना बोलें। देखिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को झूठ नहीं सिखाता, वो ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, आप गलत काम करो, लेकिन हाँ, ये हम बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माता पिता की ख्वाहिशों को, उनके सपनों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है इसमें, और ये सब कुछ जानकारी, यानी कि इस एपिसोड को फ़िलहाल हम यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन जानकारी आपको मिलेगी हमारे अगले एपिसोड में भी। आपको और कुछ बताएंगे, बच्चे क्या कुछ और सीख सकते हैं ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। जो माता पिता बच्चों से चाहते हैं वो कैसे आसानी से वो पा सकते हैं। बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर वक्त इशारा हमें कर चुका है कि आप लोगों से विराम यहाँ पर हमें इस एपिसोड में लेना होगा, लेकिन अपनी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ आपको और सीखने के लिए मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।